तो मुकाबला खेला जा रहा आविश एवेंजर्स कुरचरेम बनाम ऑटोटेक पेंजिम के बीच। ऑटोटेक पेंजिम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का निर्णय। गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी पूरे गोवा में साहिल वांगड़कर अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला और पावर प्ले का ओवर लेकर, और सामने स्ट्राइक पर अगर बात की जाए तो संजय नायक एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बड़ा नाम, दोनों ही बेस्ट वर्सेस बेस्ट फिलहाल मैदान पर। पहली गेंद स्वागत किया, पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, 6 रनों के लिए यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर। खूबसूरत शॉट संजय नायक के बल्ले से निकलता हुआ आज की इनिंग का पहला सिक्सर। इस बार अच्छी गेंद मिड ऑफ पर, अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल सम्मान दिया। इस गेंद को गैप में जरूर एग्जीक्यूट करना चाहते थे लेकिन फील्डर तैनात किया, कोई रन नहीं मिलेगा। पिछली गेंद पर एक छक्का जरूर लगा लेकिन उसके बाद साहिल वांगड़कर जानते हैं किस तरीके से कमबैक करना है। बिल्कुल डॉट गेंद के साथ फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार बिल्कुल करीबी मामला हो सकता था, ये शॉर्ट थर्डमैन का बैकअप हो रहा था लेकिन तब तक एक सिंगल चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 7 रनों पर। इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज संजीत को मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। संजीत के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए साहिल वांगड़कर लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर तैनात किया, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर तैनात किया, फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ओ इस बार खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी। इस गेंद पर अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे। इस अल्टी पल्टी स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद, इस तरीके का ये स्ट्रोक मैदान पर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की लेकिन बिल्कुल चूके वहां पर और एक डॉट के निकले। इस बार भी फुल टॉस गेंद लेकिन इस बार गेंद खड़ी हो गई, गिरेगी नो मैच लैंड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर, केवल एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या 8 रनों पर पहुंचते हुए इस बार संजय नायक जानते हैं इस ओवर में अगर खुद का विकेट ना गवाया तो एक अच्छी पारी को अंजाम दे सकते हैं मैदान पर। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, पहला रन पूरा किया जरूर था लेकिन जब तक खुद को संभाला, थ्रो किया इस गेंद को, तब तक एक सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ खेल पहली ओवर का समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 9 रन बिना किसी नुकसान के पीछे। इस से गेंदबाजी के मोर्चे पर विक्की कारापुरकर गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और सामने संजय नायक। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ की है गेंद, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे साहिल लेकिन बिल्कुल एक सिंगल रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसके साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई डबल फिगर में 10 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। और स्ट्राइक पर फिलहाल संजीत, बाएं हाथ के बल्लेबाज, थोड़ी सी परेशानी जरूर महसूस की थी पहले ओवर में लेकिन इस बार
देखना होगा क्या करते हैं अपने टीम के लिए। फिलहाल विकी कारापुरकर अपनी अगली गेंद लेकर अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत गेंद, फुल लेंथ की गेंद, यॉर्कर जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा वाइड रखा था। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एक बिंदी गेंद निकली मैदान पर और उसको वही का वही 10 रन। इस बार थोड़े से सफल हुए थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन खूबसूरत गेंद विक्की की। विक्की चाहते हैं बिल्कुल अपना स्टांस बदला था बल्लेबाज ने, इसीलिए वाइड करार दी नहीं गई ये गेंद अंपायर द्वारा। हमारे अंपायर सतगिरी नाइक और उनके साथ हर्षानंद प्रभु मैदान पर चार्ज करते हुए। इस बार भी अल्टी पल्टी शॉट का प्रयास, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। लगातार डॉट गेंदें निकालते हुए थोड़े से दबाव में जरूर है बल्लेबाज संजीत। बड़ी शॉट खेलना चाह रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंगल के साथ संजय नायक को भी अगर स्ट्राइक पर लाया जाए तो ये बल्लेबाज के पास क्षमता है बड़े हिट लगाने की। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। विक्की फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है, सामने संजीत। इस बार भी ड्राइव करना चाहते थे संजय नाइक ने, देख पलक झपकते रन वहां से चुरा। अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद 19-20 का मामला हो सकता था, लेकिन ओवरथ्रो के चलते एक और रन टीम के खाते में जुड़ गया। इस डबल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। इस बार यू मिस आई हिट, थोड़े से सफल हुए थे। तेज करा ये गेंद, लो फुल टच थी, सीधी जाके विकेटों से टकराई। एक विकेट का पतन। संजीत बैक टू पवेलियन डीजे। संजय का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ विक्की नाइक, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, और गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर करने के लिए साइड वाइंगन कर फिर से एक बार। पहली गेंद लेकर अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। पहली गेंद पुल करना चाहते थे शॉट पर, लेकिन बिल्कुल चकमा दिया। वहां पर डप्पा पड़ने के बाद उतनी उछाल नहीं मिली इस गेंद पर। एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए साइड वांगनकर। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया, हल्के हाथों से ड्राइव किया। जब तक अपने फॉलो थ्रू में खुद इस गेंद को फील्ड करते, तब तक एक सिंगल पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के साथ रन संख्या काफी देर बाद आगे बढ़ती हुई 13 रनों पर। शुरुआत की अगर बात की जाए तो काफी धीमी शुरुआत आविश एवेंजर्स कुरचोरेम की टीम की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अगर मैदान पर जब तक है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस स्कोर को कहाँ ले जाएंगे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता।
फिलहाल गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए साहिल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार भी ट्रिपल टी खेलना चाहते थे लेकिन केवल सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए 14 रन स्कोरबोर्ड पर। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी की है साहिल और विक्की ने। इस बार नजाकत भरा ये शॉट ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर रखी थी। ये गेंद दिशा दी इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर। जब तक ये गेंद फील्ड होती तब तक एक और सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रनों पर। फिलहाल विक्की नाइक देखते हैं क्या करते हैं साहिल के खिलाफ। अब तक 15 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अराउंड द कारपेट गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। थोड़ी सी हड़बड़ाहट लेकिन जब तक खुद को संभाला तब तक केवल एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। इस बार भी खूबसूरत गेंद जोरदार अपील बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए बल्ले का किनारा विकेट कीपर का सहारा संजय नाइक बैक टू पवेलियन। पर यह देखना जरूरी फिलहाल संजय के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज सूरज आए हैं विक्की का साथ देने के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों पर फिलहाल जिम्मेदारी एक सामान्यजनक लक्ष्य की तरफ बढ़ने की। फिलहाल रोहित टू विक्की। इस बार पुल किया बल्ले के बीचों बीच पुल हो गया सक्सेसफुल। गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर। ग्रीजे पहली गेंद पर स्वागत किया रोहित का एक बड़ी शॉट के साथ। विक्की नाइक ने जिस कारनामे के लिए जाने जाते हैं वो करते हुए मैदान पर। इस बार देखना होगा अंपायर का इशारा वाइड करार दिया। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23 रनों पर। फिर से एक बार रोहित तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली गेंद पर छक्का। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी कुरचरेम की टीम को अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य सेट करना है ऑटोटेक पेंजिम के खिलाफ। हालांकि उनके हार्ड हिटर बल्लेबाज एक बेहतरीन बल्लेबाज संजय नाइक आउट होकर पवेलियन की तरफ जा चुके हैं लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर फिलहाल जिम्मेदारी और वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए विक्की नाइक फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे रोहित का। इस बार ट्रिपल टी रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं कदमों से जाकर गेंद टकराई और लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर मिल गए। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 28 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे
उतना अच्छा कनेक्शन नहीं एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर जब तक ये गेंद फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ रन संख्या फिर से एक बार आगे बढ़ती हुई 29 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार भी अच्छा शॉट है बल्ले के बीचों बीच, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद काव कॉर्नर बाउंड्री पर इस गेंद को जब तक फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर। इस सूरज को एक बड़ी पारी खेलनी होगी, इस सूरज को चमकना होगा इस रात के समय पे मैदान पर। इस बार थोड़ी सी उंगलियां फेरती, गति में परिवर्तन किया था, सम्मान दिया इस गेंद को लॉन्गर बाउंड्री पर। जब तक ये गेंद फील्ड होती दूसरा रन लेना जरूर चाहते थे विकी नायक बिल्कुल, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ खेल 4 ओवर का समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 31 रन, 31 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के मोर्चे पर अर्जुन के कंधों पर भार सौंपा है गेंदबाजी का। अब तक स्कोर की अगर बात की जाए तो 31 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी, आने वाली 12 गेंदों की इनिंग बाकी। इन 12 गेंदों में कितने रन बना पाती है कुर्चरम की टीम, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल अर्जुन अपने बॉलिंग मार्क पर एक छोटे रनअप के साथ हाईवे एंड से। पहली गेंद स्विंग एंड मिस, जोरदार बल्ला घुमाया था विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती होते हुए, और 22 के रूप में एक रन जरूर जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 32 रन स्कोरबोर्ड पर। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं विक्की नायक के लिए। एक बड़ी पारी जरूर खेलना चाहेंगे विक्की नायक। एक छक्का एक चौका इनके बल्ले से निकला था पिछले ओवर में, वो विक्की नायक फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे अर्जुन की अगली गेंद का। लगभग 50-55 रन तो बनाने जरूर चाहेगी गुजरात की टीम, क्या रोक पाएंगे ऑटोटेक पंजिम के गेंदबाजी, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल रोहित तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने विक्की नायक। इस बार स्विच हिट, ये स्विच हिट नहीं ये स्वीट हिट है, खूबसूरत पिक किया, बल्ले को भेज दिया कवर कॉन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। पिछली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक लगा। इस बार भी खूबसूरत शॉट, बिल्कुल एक्शन रिप्ले, रिवर्स स्वीप, विकी नाइक के बल्ले से निकलता एक और बड़ा शॉट, यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर।
चुके हैं। विकी नायक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने स्ट्राइकिंग एंड पर फिलहाल मौजूद। सामना करेंगे अर्जुन की अगली गेंद का। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। इस बार भी धीमी गति की गेंद, इस बार भी रिवर्स स्वीप। बिल्कुल वहां पर प्रयत्न जरूर किया था, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक मैं कहूंगा अर्जुन का। खामोश रखा विक्की जैसे बल्लेबाज को और एक डॉट गेंद के साथ कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार ऑनसाइड की दिशा में अलोंग द कारपेट ड्राइव किया। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं विक्की, लेकिन बिल्कुल वहां पर ध्यान नहीं था बल्लेबाज का। और रन संख्या की अगर बात की जाए तो 45 रन, 45 रन स्कोरबोर्ड पर। और सामने स्ट्राइक पर सूरज। इस बार खूबसूरत ये गेंद, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। बिल्कुल खामोश रखा सूरज जैसे बल्लेबाज को, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। नो बॉल जरूर चेक करना चाहेंगे। और ये नो बॉल करार दी गई है। बिल्कुल जो विकेट है, विकेट के बाहर ये गेंद, पिच के बाहर, इसलिए नो बॉल करार दी गई अंपायर ने। और इस नो बॉल के चलते अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट की गेंद होगी। बिल्कुल मराठी में अगर कहा जाए तो उगड़ा डोळे बगा नीट पुढचा चेंडू फ्री हिट। और इसे फ्री हिट के गेंद पर विक्की के पास मौका है एक बड़ा शॉट खेलने का, लाइसेंस टू किल। गेंदबाज पर हावी होने का एक बड़ा शॉट खेलने का मौका। और फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर विक्की काफी अच्छी बल्लेबाजी करी अब तक। अब मौका इस फ्री हिट के गेंद पर क्या करते ये देखना मैदान पर जरूरी। बिल्कुल इस बार पुल किया, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं। फ्री हिट की ये गेंद थी, नो मैंस लैंड में गिरी ये गेंद, लेकिन केवल सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ खेल 5 ओवर का समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन, 48 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिरी ओवर इस इनिंग का, और गेंदबाजी के मोर्चे पर स्वप्निल के कंधों पर भार सौंपा है। गेंदबाजी का भार स्वप्निल के कंधों पर जरूर सौंपा है कप्तान ने। 48 रन स्कोरबोर्ड पर बच चुके हैं। कितने रन बनेंगे आने वाली आखिरी 6 गेंदों में? विकी नायक अभी भी मैदान पर मौजूद। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल रिवर्स स्वीप का प्रयास था, लेकिन चूंकि वहां पर निराश होंगे अपने आप से, कोई रन नहीं मिला। एक डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए स्वप्निल भाग्यशाली जरूर रहे। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद पर बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन भाग्य ने इस बार साथ दिया गेंदबाज का। इस बार छोड़ा जाने दिया लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड करार दी गई है। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ 49 रन स्कोरबोर्ड पर, 49 रन बन चुके हैं। फॉल स्टार्ट। इसी बीच हमारे और एक समर्थक, हमारे और एक वेल विशर दीपराज चौगुले का आगमन होता हुआ। आपका हार्दिक स्वागत दीपराज चौगुले।
इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद निकल गई, फील्डर को चकमा देके वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ 50 रन पूरे करते हुए कुचरेम की टीम और स्कोर पहुंचता हुआ 53 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिरी 4 गेंदें पहली इनिंग की, कितने रन आएंगे इस 4 गेंदों में। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर थोड़ी सी अड़बड़ाहट करते हुए पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। स्ट्राइक जरूर अपने पास रखना चाहेंगे और बिल्कुल सफल भी होंगे। विकी नाइक काफी अच्छी बल्लेबाज कर रहे हैं अपने टीम के लिए और उन्हें स्ट्राइक पर रखना जरूरी समझा। सूरज ने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया। और यहाँ पर सूरज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी सनील सावंत फिलहाल मैदान के अंदर विकी नाइक का साथ देने के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, अराउंड द कारपेट ड्राइव किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन बिल्कुल रन लेना नहीं चाहते वहां पर विकी। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 55 रन, डबल 5 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। 55 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। सनील सावंत की अगर बात की जाए तो इनके पास भी काबिलियत है, क्षमता है बड़े शॉट लगाने की, फिलहाल उसी की जरूरत है उनकी टीम को। इस बार धीमी गति की गेंद, बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं गेंद के साथ। जब तक शॉर्ट थर्ड में इस गेंद को फील्ड करते कि सिंगल पूरा हो गया और 56 रन, अब तक 56 रन लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। 56 रन। क्या होगा इस आखिरी गेंद पर, चक्का निकलेगा या फिर रोकेंगे स्वप्निल विकी को, ये देखना जरूरी है मैदान पर। थोड़ा सा फॉल स्टार्ट, फिर से एक बार जाना पड़ेगा अपनी बॉलिंग मार्क पर। फिलहाल तैयार है स्वप्निल फिर से एक बार और सामने विकी नाइक। इस बार खूबसूरत शॉट, बिल्कुल शॉट ऑफ लेंथ की गेंद थी, पिक किया इस गेंद को, भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। यूनाइटेड फोर्स इंडिया सिक्सर टीजे। कुरचरेम की टीम ने बनाए 62 रन, 62 रन बनाए, 63 रनों का 63 रनों का योगदान, 63 रनों का लक्ष्य रखा है ऑटोटेक पंजिम के सामने। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 63 रन बनाने होंगे ऑटोटेक पंजिम को।
It's opening pair, please. Autotek Panajim, please send your opening pair. Requesting captain of अंश 11 पेडनेम एंड गणेश वॉरियर्स प्लीज कम फॉर टॉस। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में बदल होता हुआ आवाज़ सुनते हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर सर हरीश काकोड़कर की। अंश 11 पेडणे आणि गणेश वॉरियर्स. अंश 11 पेडणे आणि गणेश वॉरियर्स हांचो कॅप्टन मातसो बेगीन ह्या टॉसाक. So we are going to proceed with this game. 63 runs to win. Yeah, it's not a big total. It's not a low total as well. It is a competitive total on this wicket. Important it is to get early wicket, and especially of this boy who is on the crease at the moment. Sahil Wangankar is one of the icons of tennis cricket in Goa, and that's why his wicket is also going to be very crucial for the fielding side. Avish Avengers of Curchorem. If you need to make this competitive, you got to get this man early. Otherwise, this match will not enter into over number 6. Yes, we are all ready. Ready, umpire. Sunil Sawant, Kakoda Express, with the ball in his hand, with a long run-up. He's having a wonderful time this season. Picked away. There's a man down there. I told you he's having a wonderful season. And he once again picks up Sahil Wangankar of the very first ball. Although it was a lower full toss, Sahil wanted to hit it down the ground more straighter. Got the inside part of the bat and straight to Deep, who makes no mistake. So big strike of the very first ball from Kakoda Express is none for one. Vicky also could have come. Vicky also plays very well as an opener. But now Diptesh also is a power striker. Just was there in the Tiswadi Premier League. Played some handy knocks for his side. MR strikers, but they could not enter into the playoffs. But very smart, better and very powerful striker. Here comes Kakoda Express. Well bowled, well played. Once again, it's a straight to that man. He was very alert. The ball bounced a little bit more. Deep was alert. Deep is fielding just under that floodlight. So getting a single. Opens the account. 1 for 1 so far. So for the first time, Amit is going to take the strike in this game. There's a falter in his run-up, because I think there is a end of the pitch where majority of the bowlers might have just trouble when you have got a long run-up, not for the short run-up, but long run-up just can falter in your steps. You got to be ready to bowl the next one. Yeah, slight change in the field here. Man has been asked to come in the short mid-wicket region. Man from the deep mid-wicket been told to go in the square leg for Amit. Nicely driven. Never intended to hit the ball hard. A slight misfield in the... but just recovers very well. Good backup by Gandhar Prabhudesai there, and stopping the ball, sending it back. It's very difficult here to field. The ball just turns away from you at any point of time. So got to be really alert and bend it little lower. So if you stay upright, you might just miss many of the balls here on this outfield.
Well, stopped. What is that? Out? He's got him. Yes, he's walking back. He thought like a full toss ball, going for the switch. He premeditated shot, and he gets his wicket of a full toss. Two full toss balls from Sunil Sawant, and both the wickets have been taken off the same ball. So Diptesh also goes back. Not a good start. 2 for 2. Narendra walks in for Autotek Panajim. Not a best of the start. Shaky start here. 2 for 2. They would like to get at least a decent go ahead. Here comes Narendra, left-hander on strike, and Sunil Sawant bowls well to the left-handers. He has got a good off-cutter. He has got good pacey delivery that comes in sharply to the left-hander. Should be a chance. Should be a chance. Oh, how did that miss there? Sanjay saying it is mine. Sachit was slow of the box to react. This was a definite wicket. Missing that easy chance. No start was taken by the fielder in the mid of, I think, Sanchit it is. And a chance gone down. 3 runs on the board for loss of 2 wickets. And chasing 63 runs. Trying to play on the leg side, just going on top of the wickets. Excellent start. A brilliant start given by Kakoda Express. Picks up 2 wickets, just conceded 3 runs. And it has put the side batting at the moment on the back foot straight away. We go ahead. A good start given by Sunil Sawant, Kakoda Express. 3 for 2 in 63. Now 60 runs required in 30 balls. That makes equation to go at around 12 runs per over. That's why you need the best of the start from the bowler. And aggressive start is always an aggressive thinker. This is in the air. This might be a difficult chance. Sunil Sawant is a safe catcher. He doesn't drop many. Another one bites the dust here. They are 3 down. 3 for 3. Autotek Panajim.
comes in one of the most experienced and the legendary player from Panjim, Vicky Karapurkar. Bowled an excellent over, picked up a wicket and just conceded 3 runs. Well, lovely shot here. He's showing other sides of his cricket as a batter, switching it and playing it towards the extra cover region. This is also the power play over. There's a man in the square leg, there's a man in the wide long on region and the long off. So 3 fielders have been kept outside. Wicket trying to take the advantage here. The score has just moved on to 7 for 3. Vicky versus Vicky. What a battle it is going to be. Which Vicky is going to come on top? In the air, straight to the man. And Vicky strikes once again. Excellent piece of bowling. When Vicky is bowling, you feel that the ball is right in the slot. The ball dips down and it cuts in sharply. And that is where he is one of the most instrumental bowlers it has been for Curchorem for over the years. Another bites the dust. They are 4 down at just 8 on the board. And that is how Vicky picks up his most of the wicket. What a good all-round performance so far from Vicky. A single-headed innings of 39 runs. 39 runs. And that is where they could post at 62 runs. Vicky coming back in form with batting. I have not seen him at the best of the touches in this season with bat, but definitely performed excellently with ball. But good signs here for the team from Curchorem Municipality that Vicky is showing all-round abilities. Back off length. He is a fantastic bowler. He always keeps thinking. He doesn't have that much of express pace, but he varies his length and varies his pace as well as cuts the ball in and away. So you got to see the bowler at the last moment and his grip as well. If you don't see it, then he might just trouble you. You might be unsighted with those difficult balls that he bowls. Always a wicket-taking bowler. Another one this time. Slog towards that cow corner region, gets a single. And a scintillating over from Vicky. Just concedes 5 runs in that over and picks up important 2 wickets. So he's... So 8 for the loss of 4 at the end of 2 overs. Two overs. If at all Vicky was bowling, he might be bowling over number 4. But they have decided Sunny also is in good form. He has also started well by picking up 2 wickets and just conceding 3 runs. So they believe here they've got 2 bowlers who can bowl 2 overs. So right now they have opted for Sunny Sawant as bowled economically and also wicket taking. So Vicky is definitely not going to get his second over. That was the discussion in the huddle. Man kept for the deep covers at long off, long on mid wicket and backward square leg.
Well bowled. Pacey right on the toes. Toe crusher that was. Pritesh watching the ball carefully and just playing on the leg side for a single. Not trying to just whack the ball hard. He's a difficult customer. He's very difficult many a times when he's bowling the slower balls as well. Well bowled so far. They are making this match a little bit more difficult for Autotek Panajim. It's 9 for the loss of 4. A slight change in field. Amit is still there on the wicket. Came as an opener. Saw 4 of his partners going back to the pavilion. Lovely ball. Excellent bowling. This is pacey. This is nippy. And this is a perfect yorker. A wideish yorker. Going straight in the hands of Bhatt. So dot ball. After a single of the first ball of over number 3. The score is still on 9. They are still into single digit. Well bowled, clipped on the leg side. Looking to find a gap. Well fielded here. It is Sanjay Naik. So they move on to 10 now. 10 for the loss of 4. 3 balls left in over number 3. Pritesh is a power hitter. He has got tremendous power. Bat speed is what I witnessed in Tiswadi Premier League and can be very, very handy lower down the order. Number 5, number 6. Much better player than coming at number 5 and 6. Oh, this is nicely hit. Straight in the hands. Lack of power. Did not middle it. And Sunil Sawant strikes his 3rd one. So half the side of Autotek Panajim is back into the dugout. It's 10 for 5. Savi coming almost at number 7. Maybe they have decided that Rajesh is going to come after the halfway mark to take the advantage of maybe over bowler number 4, bowler number 5. So come back a lot early. Well bowled. Right in the block hole. Fielded well here by Vipul Naik in the short covers. Not allowing the ball to just sneak in through his hands. 11. So another over that has gone by with just 3 runs. Just like the first over. And it's going to be the last ball from Sunil Sawant. He's picked up 3 crucial wickets after the 5 to have been picked by Vicky Naik. Full toss ball, but it is outright quick. So bat speed, you got to be really fast. So just the 4 runs considered by Sunil Sawant, and it's 12 for the loss of 5 after the completion of over number 3. It's a very strong domination at the moment from the bowlers of Avish Avengers of Curchorem that has put a stranglehold on the batters of Autotek Panajim. But now the top 2 bowlers have finished their quota. It's about the last 3 bowlers, but they've got pretty strength in the bowling lineup. Let's see how they come up with the next plan. So they have decided to give a ball to Gandhar Prabhu, not Sanjay Naik.
So let's see how they are going to go ahead. They have got Deep as well, bowling that 1 over. They have got good options. Sanjay Naik also can bowl. Yeah, best start here. Back of length. That is going to be a difficult length to be hitting away. Amit has seen enough of the bowlers. He's just trying to, and waiting for his opportunities, waiting for the loose ball. He's still not coming. This man, I've seen him striking. Once he strikes one, he is going to be unstoppable force. Rajesh Gosavi. So many matches single-handedly won by this big striker of Autotek Panji. Certainly, I am surprised here to be a center him at almost number 7. And so many wickets have gone down. Yeah, looking to whack the ball, but they have still not got that weak ball. No loose balls here from any bowler. This lower full toss is very effective ball in tennis ball cricket. I always mention that. They need just one strike. Need just one strike to get this length and line away from the bowlers of Avish Avengers. So far, they've kept it very tight. Picked away, not the best of the timing. Still searching for that timing and looking for that boundary and the 6. They just got one boundary in over number 4 BR. One boundary. You can't win the match with one boundary, 1-6. We are into the 4th over. They require plenty of those. They are putting pressure back on themselves by not targeting the bowlers and not getting those flurry of boundaries and 6s. Is going to make it a little difficult. Breathless in the last 2. In the air, no timing whatsoever. Good effort there by Vipul Naik. But here to run and to take the catch is going down slightly difficult. On any other ground, he might have dived, but not here. So another single. Gandhar has also kept the things very much in control. Very disciplined bowling lineup so far. 4 single of the 4 balls and nothing happening for Autotek Panajim. They are bowling outright pace and bowling in a very dominant fashion. 16 for 5. Gunnar 1. No striking, no connection. Absolute struggle here for the batters. 17. Plenty of runs to get now. The 63 has been made to look like 80-85 by the bowling of Avish Avengers of Curchorem. They're still searching for that first big strike. In over number 4. This is in the air. This is going to be once again was turning up behind. Thought that the ball has timed well and was going behind him, swirling along, and that is a drop chance, but a difficult chance. It was a difficult chance, and that's the end of over number 4. It's 18 for the loss of 5. Let us see whether he's going to bowl the last over or Vipul Naik is going to bowl that over. Certainly they have given it in the hands of Dark Horse of Curchorem, Deep. A very skillful bowler. Bowls the back of length very much and doesn't concede too many extras. Loose ball here. Loose ball, lower full toss. He was waiting for that. And finally, the first 6 coming for Autotek Panajim right in the 5th over.
So the full toss ball, Rajesh in any half clearing his front leg and trying to back the ball. So that was much easy for him. Now it's all about top gear. It's all about top gear. It's all about sixes and boundaries. 24 on the board. Love the drive. What a powerful drive. No chance for the fielder to cut that off. Gandhar Prabhu just kept the ball watching past him. Pressure put on Deep right back of the first two balls. 10 runs taken, moves the score to 28. 45 runs were needed of 12 balls. Now 35 needed of 10. So equation is coming down drastically. The first ball was a lower full toss. Second one was right in the slot. Still unable to find it. And the ball has gone in the mid of area. The man has been taken from there. Yes, outside edge going down towards the third man region. The ball might race on, race on, race on. Well fielded, very well fielded. Putting the ball back in play and a couple of runs taken in the deep. And they are certainly not looking for the third one, as it's going to be a strike once again back for Rajesh Gosavi. Well stopped here by Mandar Desai. So 12 runs. 12 runs of the first three balls. The chase is on the cards. I saw this man scoring a blistering 60 runs. What an innings that was at the Muli Chashak in the semi-finals. Well bowled, right in the block hole. Perfect length, trying to lift the ball. Well, he could not get even a touch of the bat. That's where Deep is smart. He's coming back strongly after those boundaries, and boundary in the 6 of the first two. Very interesting match on our hands at this stage. Trying to heave the ball on the leg side. This is a difficult length here. The back of length. Another single, which takes the score move on to 31. 31 in over number 5. Another 32 runs required in 1 over. See how difficult the ask is. The first by batter struggles and Rajesh Gosavi just giving some sort of momentum here. But I think they have left it too many in the last over. This ball should go for 6. Deep just pulling himself off at the last stride. 32 runs required of 7 balls. A good ball here is going to be a good finish. In the air, finally a good strike. They get the 6 of the last ball. Amit gets a biggie, and a biggie out of the park. So that will take the score rapidly race on to 37. 26 runs required of the last 6 balls. 26 runs. Last 6. So 20 runs आए. Let's see what is the decision coming from the third umpire. Maybe they have referred for the checking, but let's see what is coming up from the umpire. 26 runs otherwise will require of the last 6 balls.
It's a fair ball. So after reviewing all the angles, it's a fair ball. So 26 runs required of the last 6 balls. So this time driven well here of the very first ball that keeps Rajesh Gosavi. He's the danger man. If anyone can strike 4 sixes, is this man. Yes, it's not that I'm taking anything away from Amit, but so far we have seen Rajesh Gosavi striking a 6 and a boundary, and he has shown in the past his credibility with the bat. So now it's all about taking 25 runs of 5 balls. Sanjay Naik bowling last over, surprisingly last over. Well bowled, perfect Yorker. Well, if we bowl that, it's very difficult for any batter. And Amit is just trying to hit the ball in the V area. If you are going to play a constant shot, then Sanjay Naik is going to be good enough for you. 24 of 4. So it's going away from Autotek Panajim with 1 dot ball. They are out of this race. So good pacey delivery here from Sanjay Naik. And just going to take a stroll for a single there. 23 runs required of 3 balls. What a good bowling performance. But I think you should give credit to that innings from Vicky. He was the only one who stood strong at the tide when the batters were struggling. And that's the reason why they could post 60 plus. It was Vicky Naik's innings and those 2 wickets. I think it's a match-winning performance for me. .39 in the context when the second highest run getter is 11 runs. So you can imagine how crucial those 39 were. This time trying to play the lob shot has been taken. Good running catch here by the man in the short square leg. Taking a good running catch. That's the end of another wicket. So Autotek Panajim have lost it. They certainly know in the way they are walking towards the dugout there. They are out of this race. Excellent and a strong dominant performance from this Avish Avengers team. It's not a big total, 63 by any stretch, but they made it difficult by their good line and length, and they have bowled outright pace. Started well with a couple of wickets and then kept on chipping at wickets on a regular basis. Should be another one. It should be an easy catch. Banging in short. Not hitting into his hitting arc. And Sanjay Naik with back-to-back wickets will be on the hat-trick of the last ball. Rohit Pawle comes in and Rohit Pawle goes. So next game we are going to have a look at the next game. The next 2 opponents. Unstrikers, Ansh 11 pen name Sri Ganesh Warriors. Unstrikers from Pedne are going to play the next match, and Avish Avengers have to wait for the pre-quarter finals when they bowl this last ball. Sanjay Naik on hat-trick. Good last bouncer there, and a wide call here from the leg umpire. Was it the first bouncer or was it just over the head? Sanjay Naik is saying, I missed the chance over the hat-trick there. So hat-trick is off, but he can certainly get 3 wickets there. Nicely driven. So a very, very comfortable victory in the end. It was not a very imposing total, but they have done an incredible job at the moment as far as the bowling is concerned. So that's how the game has ended. They move into the next round. And none of the batters, apart from those 2, Amit and Rajesh, has ended into the double digits.
So it's comfortable victory for Avish Avengers. They march on to the next game, courtesy of their disciplined bowling attack, not conceding too many extras as well in these innings.